Hi to all of you. Now, today I'm going to discuss a new topic in geomorphology, the mountain building. And once you look at the previous year paper, this is the frequently asked question in UPSC mains. And you got various questions from this concept in screening paper also. So this is very vital topic in geomorphology. So now how I will cover this topic, let's see first the structure of the topic, how I will cover. So once you look at the mountain building process, the term is the mountain building. So first of all, here I will discuss with you people what is the mountain building in introduction. What is mountain building? And how this term is different than the word orogenesis. What the word orogenesis? The literal meaning of the term orogenesis means also the mountain building, but when you go through the syllabus, then the term mountain building has been written, not the word orogenesis. So this is the synonymous word, because geographers use synonymously, or the people use synonymously, but there is a slight difference between both these terms, the term mountain building and the term orogenesis. So I will also explain the basic differences between the term, this term of orogenesis. Okay. Now, after that, I will explain various types of mountains. Various types of mountains means I will classify it. Types of mountains means I will discuss the classification on various bases. Classification of mountain. On various bases. I will explain. And further, when I will explain the different type of mountains, okay, then I will explain the concept of origin. Concept of origin of different mountains in the light of various theories. Okay, so different geographer has given the different opinion regarding the origin of the mountains. So I will explain the various theory, the theory of Arthur Holmes I will explain, okay, convectional model,
Okay, contraction theory I will also explain. I will also explain the geosynclinal theory of Kober as well as the plate tectonics theory, how this theory explain the mountain building. And that section is much more important for you people. Okay, so now let's start with the introduction. When you look at the introduction, then as I have said, first we have to understand the differences between the word mountain building and orogenesis. Now, once you look at this term, orogenesis was given by Gilbert. Okay, the term orogenesis, once you look at, is given by the Gilbert. Okay, let's pick another color to identify it. So, once you look at, the term orogeny is coined by the G.K. Gilbert. And what this term describes is, this term describes what? This term describes the concept of mountain building. So mountain building, he used the term orogeny. The G.K. Gilbert has used the term orogeny to describe the process of mountain building. Okay, so when we use the word mountain building, how it differ? So here I have mentioned that the term orogenesis is used synonymous to the term mountain building, because orogen means, when you look at orogen means the mountain building processes. Okay, so mountain building, orogenesis, the genesis, the process of the mountain building. So how this term is different? Let's see, because synonymously it used by the different people in geography. But what is the most fundamental differences is, when we use the term mountain building, it explains the formation of fold mountain. But as you know, there are different kind of mountain exist on the planet Earth. Okay, over the crustal. It is a crustal feature. It is the second order landform. The mountain is a second order landform. So when you look at this second order landform, the mountain is the second order landform. As I have discussed in my previous lecture, why we called it second order landform. Okay, continental ocean basin are the first order landform. Okay, now when you look at this second order landform, the mountains, okay, over the crest, you find different kind of mountain. You can observe the volcanic mountains. Okay, like Mount Kilimanjaro is a volcanic mountain. Okay, Mount Mauna Loa is a volcanic mountain. Mount Fujiyama is a volcanic mountain. So there are so many volcanic mountains we observe on the crustal region. Apart from that, you can observe the block mountains. Okay, block mountains often forms along the fault lines. Okay, due to the faulting of rocks. And why the faulting takes place, further I will explain, due to compressional or the tensional forces. Okay, so when the tensile forces act or when the compressional forces act, the rocks breaks and cracks, and along the cracks or the fault or the fracture, when the movement of rocks takes place, as a result of which the block mountain and the graben forms. So block mountain is another kind of mountain. Apart from that, escarpment, we observe the escarpment where you can remember the concept of suesta. Okay, in which what we find, one side there is a gentler slope, another side there is a steep slope. So मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब हम ये देखते हैं, ठीक, मेसा, सुएस्टा, so suesta, now inclination you can find out, and hogback. So this is the hogback, this is suesta, and in suesta this is escarpment. So how the escarpment form? When the rivers cut the plateau due to dissection and erosion of the softer rocks, okay, escarpment form. Further I will explain here again. Okay, at the edge of plateau also escarpment forms. Say for example, you can find out the Western Ghats, okay, an example of escarpment. Okay, the Rajmahal Hills, an example of escarpment. So what kind of mountains we are observing? Volcanic mountain, block mountain, domal mountain also.
Okay, lava dome. Have you heard about lava dome? That is also a mountainous structure, an elevated surface over the crest. Okay, old mountain, escarpment. So there are different kind of mountains. When we use the word orogeny, it means that we are explaining the formation of all kind of mountain. But in your syllabus, the word is mountain building. It means you have to explain only the process of formation of fold mountain, not other type of mountains. Okay. So what is the basic difference between the term mountain building? When we use the word mountain building, the mountain building involves only the compressional forces. As a result of compressional forces, what kind of mountain forms? The fold mountain forms. So when this term is used, it means you have to describe the origin of the fold mountain and the processes or genesis of the fold mountain. You have to explain the formation and stages of the formation of the fold mountain only. But the term orogenesis, if used, then it explains the formation of all kind of mountain. Okay, all kind of mountain. So this is the basic difference between the term mountain building as well as what? The term orogenesis. ये differences समझना. And mountains are the landform of second order. I had already explained, okay, on the globe. And further, we can classify the mountain into different types. Some mountains, as I have said, volcanic, some are escarpment, some are domal, some are residual or relict mountains, some are block, some are fold mountain. Okay, so there are different type of mountain. Now, on the basis of period of origin, the geographers also classify the mountain. इसका मतलब क्या है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में आप अर्थ को डिवाइड करते हो तो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में ओरिजिन ही हुई, यानी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हुआ. तो हम टाइम पीरियड के बेसिस पर भी माउंटेन्स को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर हैं, जो अभी रेसिडुअल और रेलिक्ट फॉर्म में हैं, जो इरोड हो चुके हैं, ठीक है ना, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा, लाइक विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा. गेटिंग माई पॉइंट दैट ऑल दीज माउंटेन्स आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ प्लेटू. वो आपको प्लेटू की तरह दिखेंगे, रेसिडुअल है, रेलिक्ट है, डाइसेक्टेड है, ओके, ग्रेडेड है. तो अभी ऐसा आपको दिखाई देगा. दैट ओल्डेस्ट माउंटेन वर बिल्ट ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड. ओके, बिफोर कैम्ब्रियन देयर इज अ period Precambrian. So the oldest mountain on the earth crust are the Precambrian mountain, which forms in the Precambrian period. The name itself suggested, and they are basically shield. Okay, globular mound. They are called shield, plutonic in origin. Okay, they form the basement, and the rock is non-porous, very hard. They are made up of granite and gneiss, plutonic rocks. ठीक है ना, प्रीकैम्ब्रियन. इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें क्रेटॉन एंड प्लेटफॉर्म्स है. हार्ड स्ट्रक्चर, gneissic स्ट्रक्चर एंड ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर फॉर्म द क्रेटॉन विच फॉर्म द बेसमेंट. अगर आप पेनिनसुलर इंडिया का भी बेस देखेंगे, सो द 2/3 पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज built by the Archean rocks. The Archean rocks, the oldest rocks. Okay, so क्रेटॉन, बेसमेंट. कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है. लॉरेंशियन. So if you look at in Canada, there is a Laurentian plateau. Okay, so earlier it was a mountain. Now it is dissected and graded by the different agent of gradation. So Laurentian is an example. Huronian in the Europe, Hudsonian mountain and Finno-Scandinavian mountain are an example of the Precambrian mountain. So Precambrian are the oldest mountain on this planet Earth over the crust. Okay, now the Caledonian mountain. When this Caledonian mountain originated? During the Silurian and Devonian period. Try to remember the class of geological time period. When I was discussing the geological time scale, I had discussed that Silurian period is known as age of fishes and Devonian period is known as age of amphibians. ओके, तो आपने देखा था कि एम्फीबियंस डेवोनियन पीरियड में ग्रेजुअली डोमिनेट हो गए. सिलोरियन में फिशेस डोमिनेंट थी अगर हम स्पीसीज की बात करें.
उसी पीरियड में ड्यूरिंग सिल्यूरियन एंड डेवोनियन some mountains built. Okay, what are the example of that? Appalachian. Okay, Appalachian mountain system in USA is an example of what? Is an example of Caledonian mountain. In India, Aravalli. In India, Satpura. Okay, these are the old fold mountain, almost originate 2.6 to 2.4 billion before present. In geological structure, I had discussed the origin of fold mountain in India. Okay, and Mahadev Hills, Scotland. When you look at in Europe, Scotland, Northern Ireland, Wales, and Northern England's mountains are formed during the period of Caledonian. It means during the period of Silurian and Devonian. Okay, now after that, younger to this Caledonian are Hercynian. They built during the late Carboniferous to the Permian. So Permo-Carboniferous period, some mountain were built known as what it is known as Hercynian fold mountain. Okay, so Hercynian fold mountain time याद रखना है तुम्हें, late Carboniferous to Permian or Permo-Carboniferous you can call it. Okay, now what are the example? Ural, which forms the boundary between Europe and Asia. Okay, is an example of Hercynian fold mountain. Okay, Southern Ireland in Europe, another. Okay, now the southern Wales. Okay, Pennines. Okay, Pennines mountain, and at the border of Spain and France, when you look at Brittany in the France, Black Forest in Germany, Vosges in France, the extension of this Black Forest in France is Vosges. Okay, Bohemian Forest, Harz mountain in Germany, Altai mountain, Altai Shan, Yansan mountain, okay, Xian mountain, Kinghan mountain, Mongolian plateau is an also example of Hercynian mountain, and the Gobi deserts. Okay, so all these are an example of Hercynian mountain. Hercynian mountain are also a fold mountain which built during the Permo-Carboniferous period. So on the basis of the time period, we can classify the mountain as a Precambrian, Caledonian, Hercynian, and you have to keep in mind these examples because in the screening examinations they usually ask the example. Okay, so it is an example based question. Now the last is the Alpine mountain. Okay, Alpine mountain system, when you look at Alpine means the tertiary young fold mountain. These are latest in origin, younger to all these. That's why they are very loftiest, rocky, Andes, okay, Himalayas, Alps. All these are example of what? The young fold mountain which originate during the tertiary period. Okay, tertiary period. So these are the mountains, classification of mountains I had discussed based on their time of origin. Okay, कि कब इनकी origin हुई, किस period में हुई. Okay, now when you look at classification on the basis of the height. ओके अभी मैंने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे बताया था? पीरियड के बेसिस पर, पीरियड ऑफ ओरिजिन. अभी हाइट के आधार पे लो माउंटेन रेंजेस किसे कहेंगे? 7 to 1000 मीटर जिनकी हाइट होगी, ठीक है ना, 1 किलोमीटर तक की जिसकी हाइट होगी सी लेवल से, मीन सी लेवल से, हम उसे कहेंगे लो माउंटेन्स. ठीक है, ऐसे माउंटेन्स आपको क्या दिखाई देंगे? जितने भी रेलिक्ट माउंटेन्स हैं, रेसिडुअल माउंटेन किसे कहते हैं? रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन. जो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन फॉर्मेशन के बाद एजेंट ऑफ ग्रेडेशन ने उन पे काम किया, उसको इरोड और डाइसेक्ट कर दिया, उनकी हाइट कम हो गई, तो ज़्यादातर आपको दिखाई देते हैं या यंगर एलिवेशंस के माउंटेन दिखाई देते हैं, लो माउंटेन्स. रफ माउंटेन रेंजेस 1000 to 500 or 1500 मीटर. सो 1 किलोमीटर to 1.5 किलोमीटर. नाउ 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर रेंजेस अगर है तो आपको रगेड माउंटेन्स हैं. ओके, और फिर हाई माउंटेन्स अबव 2 किलोमीटर और 2000 मीटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वी कैन आल्सो कैटेगराइज व्हाट द माउंटेन्स. ओके, तो एलिवेशन के आधार पर अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन,
If the mountain is originate on the continental mass, it is known as continental mountain. And when some are oceanic in origin, oceanic island के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हवाईयन आइलैंड, उसके ऊपर ठीक है. So there are lots of Saint Helena, okay, Ascension, all these are the oceanic mountain. उनका फॉर्मेशन यहाँ हुआ है. Okay, so आप कॉन्टिनेंटल को देखोगे अलोंग द कोस्टल रीजन, कोस्टल माउंटेन, जैसे आप रॉकीज देखिए, एंडीज देखिए, एप्लेशियन देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोस्टल, दे आर एट द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. ओके, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोस्टल माउंटेन. एंड इनलैंड माउंटेन यूराल, ओके, कॉन्टिनेंटल, मिड ऑफ द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, मैंने बताया था यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज बनाता है, तो ये इनलैंड माउंटेन का एग्जांपल है. वॉसेजेस मैंने अभी बताया, या ब्लैक फॉरेस्ट इन फ्रांस एंड जर्मनी रेस्पेक्टिवली. ओके, एंड द ओशियनिक माउंटेन, मौना किया, मौना लोआ, ओके, आइलैंड, एंटेलियन माउंटेन्स. ओके, these are the example of, okay, these are the example of oceanic mountain. So you must keep in mind, okay, you must keep in mind that we can categorize the mountain on various basis. हम लोग यहाँ पर अलग basis पर classify कर सकते हैं. Just you must keep in mind all this nomenclature as well as classification. Okay, now once you look at, when you look at this, okay, once you look at this, on the basis of the mode of origin, when you look at on the basis of mode of origin, अब देखेंगे mode of origin के basis पर हम कैसे classify कर सकते हैं mountains को. ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, टाइम पीरियड के बेसिस पर, मैंने कैसे बताया हाइट के बेसिस पर, मैंने कहाँ बताया कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कॉन्टिनेंटल मासेस है कि ओशियन है. ओके, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन. एक और क्लासिफिकेशन बेस है मोड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कैसे हुआ. तो कुछ माउंटेन टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा बिल्ट होते हैं, वी कॉल्ड इट ओरिजिनल माउंटेन और टेक्टोनिक माउंटेन. जैसे फोल्ड माउंटेन, अभी मैं इसके प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज यू हैव टू लर्न इट अंडर द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, बिकॉज मैंने कहा व्हाट इज माउंटेन बिल्डिंग व्हेन वी एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ द फोल्ड माउंटेन. ओके, देन ब्लॉक माउंटेन्स, ओके, मैंने बताया था कॉम्प्रेशनल टेंशनल फोर्सेस के एक्शन से बनते हैं. डोमल माउंटेन, अभी मैंने बताया था कि लावा इरप्शन होते हैं, विस्कस लावा इरप्शन, उससे आप देखते हो डोमल माउंटेन. ओके, देन द माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, अदर वोल्केनिक माउंटेन आर नोन एज माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन. उसके अलावा एस्कार्पमेंट भी है. ठीक है, वो सर्कम इरोजनल माउंटेन का भी एग्जाम्पल है. एस्कार्पमेंट इरोजनल प्रोसेस से होते हैं, या रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन इज अनदर एग्जाम्पल. ओके, so circum erosional or relict or residual, and escarpment is also due to the erosional activity and other activity also. Escarpment बनने के कई reason है. Okay, further I will explain. तो यहाँ देखेंगे, because here the topic is mountain building, so I have to explain the formation of fold mountain. So let's first learn the feature of fold mountain, and then I will also explain what the other type of mountain also. So basically once you look at this other type of mountain, so let's see first. Okay, so when you look at first the fold mountain, further I will explain in detail the process of formation of fold mountain. Just understand here the basics. Okay, here I will explain in detail the formation. Okay, but in general how this fold mountain forms. The fold mountain forms when
the crustal rocks bend in a wave-like fashion. How the crustal rocks bend in a wave-like fashion when the endogenetic forces acts. What are the endogenetic forces act when you look at? And where the fold mountain forms? At the convergence where the magma converges. Okay, convergence takes place. So this due to this convergence, when two forces applied from two sides, a compression, so it is known as compressional forces. Compressional forces. So when the two forces applied like that, what happened? This rock, the crustal rocks, bend in a wave-like fashion. Okay. This wavy structure is known as fold mountain. Okay. So what are the forces which lead to the formation of fold mountain? Is a compressional forces. And how compressional forces originate, we'll discuss. I had already discussed in the geomorphic processes section. Okay, but again I will explain in detail how these compressional forces originated. Okay, and it morphed the structure. It changed the structure. Crustal rocks bend in a wave-like fashion. आपको याद होगा कि जब मैंने कहा था कि कई बार इस रॉक्स के ऊपर कॉम्प्रेशनल फोर्सेस काम करते हैं, तो इसकी ऐसे वेव लाइक फैशन में बेंडिंग नहीं होती, ये ऐसे होता है. हम इसे क्रिस्टल बेंडिंग कहते हैं. ये क्रिस्टल बेंडिंग में वॉर्पिंग भी होता है और फोल्डिंग भी होता है. दिस इज नोन एज फोल्डिंग. व्हेन द रॉक्स बेंड इन अ वेव लाइक फैशन, इट इज नोन एज फोल्डिंग. और ये वॉर्पिंग कहलाता है. क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो इसे अप वॉर्पिंग कहते हैं. अप वॉर्प्ड माउंटेन भी होते हैं. ओके, दिस इज द माउंटेन and this is the valley. Okay, so due to upwarping also the mountain form, and upwarping also takes place due to the compressional forces. But हमें mountain building process में क्या पढ़ना है? Fold mountain पढ़ना है. Folding के लिए भी compressional ही forces responsible है, और warping के लिए भी. पर कई बार warping up ना होकर down भी होती है. ठीक है, ये शिनक्लाइन बना देते हैं और ये एंटीक्लाइंस बना देते हैं. तो इसको हम कहते हैं डाउन वॉर्पिंग. कॉम्प्रेशनल फोर्सेस आया और जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो रॉक्स ऐसे ना बेंड करके ऐसे बेंड हो गए, तो ये शिनक्लाइन हो गई. ठीक है, और इस डिप्रेशन को शिनक्लाइन कहते हैं, इधर एंटीक्लाइन हो गई. ओके, सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो बिल्ट ड्यू टू कॉम्प्रेशनल एक्शन. ठीक है, fold mountain. Then when you look at the block mountains, how this block mountain forms. Say for example, if you look at this rock, okay, due to sometimes the compressional forces, दोनों कारणों से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन. एक तो कॉम्प्रेशनल फोर्सेस के कारण भी और टेंशनल फोर्सेस के कारण भी. When excessive compressional forces act, this rocks cracks. ठीक है, क्रैक हो गया, यहाँ पे क्रैक हो गया at this place. Now, when this crack is widen, जब यहाँ ये क्रैक वाइडन होगा, ये रॉक्स के बीच में गैप क्रिएट होगा, we called that fault. हम उसे फॉल्ट कहते हैं. Okay, when the cracks widen and the rocks started sliding. Okay, अब क्या हो गया कि देखो, इसको देखते हो, ये जो अब इस क्रैक के कारण ये हिस्सा ऊपर आ गया, ये नीचे हो गया, है ना. अगर मैं क्रैक के पोजीशन से देखूं तो ये हमें ऊपर दिखाई देगा, इस क्रैक के ये नीचे दिखाई देगा. इस पोर्शन को हम कहते हैं हैंगिंग वॉल. What we called it, this portion, hanging wall.
एंड दिस पोर्शन इज नोन एज फुटवॉल। इसे क्या बोलते हैं? फुटवॉल। ओके, अभी देखोगे तो क्या हमें दिखाई देता है, ड्यू टू एक्सेसिव कॉम्प्रेशनल फोर्सेस व्हेन हैंगिंग वॉल स्किड अबव ओवर द फुटवॉल्स, ये गैप है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया, ठीक है, ऐसा पोजीशन आ गया, ये है फॉल्ट लाइन, इसके अलोंग ये ऊपर मूव कर गया ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्सेस, ठीक है, लाइक दैट इट मूव्स हियर, it moves above this, then we called this structure reverse fault। हम इसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। this fault is known as reverse fault, and when the reverse fault forms, ये जो है ये ब्लॉक माउंटेन या इसे हॉस्ट कहते हो, HORST, host, and this is known as graben or the rift valley, graben or rift valley। okay, so it is known as graben or rift valley। so block mountain formation कैसे होगा? along the fault line, वो रिवर्स फॉल्ट लाइन के along भी होगा। बट एक और कंडीशन बताओ, अगर ये हैंगिंग वॉल नीचे आए, ठीक है ना, अगर ऐसा कंडीशन हो if ये जो है footwall is at the same place, okay, and the hanging wall is skidding, so now this is the rift valley, this is the rift valley or graben, and this is the block mountain, this is the block mountain or host, and this type of fault is known as normal fault। हम इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉल्ट। तो तुम क्या देख रहे हो कि नॉर्मल फॉल्ट के अलोंग भी ब्लॉक माउंटेन, रिवर्स फॉल्ट के अलोंग भी ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। बट इन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हमें ब्लॉक माउंटेन ओरोजिनी नहीं एक्सप्लेन करनी। अगर ओवरऑल आ गया कि व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन्स आर देयर, बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन आल्सो कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स एंड देयर ओरोजिनी, तो वहां पर आपको फिर केवल फोल्ड माउंटेन के बारे में नहीं लिखना। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली द फोल्ड माउंटेन। okay, that's why I had explained कि how the block mountain forms। so block mountain forms in two different condition, where the reverse fault is generated, where the normal fault is generated, okay, due to the, अब ये normal fault और reverse fault, ये reverse fault compressional forces के कारण होते हैं, लेकिन ये जो बनता है normal fault वो tensional forces के कारण बनते हैं। यानी अगर इस rock के ऊपर, if this is the rock and if the forces applied from two sides, okay, converge at a point, then due to compression when this crack is appear, इस क्रैक के लॉन्ग हैंगिंग वॉल ऊपर चला गया, ओके, फुटवॉल नीचे रह गया, तो रिवर्स फॉल्ट बना, रिवर्स फॉल्ट के लॉन्ग ब्लॉक माउंटेन बने, तो ये ब्लॉक माउंटेन कॉम्प्रेशनल फोर्स से बने। लेकिन अगर टेंशनल फोर्स अप्लाई हो, यानी दो फोर्स टू डिफरेंट डायरेक्शन में इस रॉक के ऊपर एक्ट करते हो, और उसके कारण इंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्सेस के कारण अगर यहाँ पर क्या हुआ, क्रैक्स आते हैं, और उस क्रैक के अलोंग क्या हो रहे हैं कि जो हैंगिंग वॉल है वो नीचे चला जाता है, उसके कारण भी ब्लॉक माउंटेन और ग्रैबन बनते हैं। तो याद रखना कि नॉर्मल फॉल्ट का फॉर्मेशन टेंशनल फोर्सेस के कारण हो रहा है, टेंशनल फोर्सेस, ओके, और रिवर्स फॉल्ट का फॉर्मेशन कॉम्प्रेशनल फोर्सेस के कारण, कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। इन बोथ द कंडीशंस व्हाट फॉर्म्स द ब्लॉक माउंटेन्स, तो मैंने अभी आपको बता दिया। नाउ when we talk about the mountain of accumulation, I had also mentioned the mountain of accumulation। mountain of accumulation,
So what are the mountain of accumulation when you look at generally the volcanic mountain? Okay, as you know that when the viscous basaltic magma, not watery, बिकॉज अगर बेसाल्टिक मैग्मा आउटपोर हो और वाटरी हो तो प्लेटू बनाता है. डेक्कन प्लेटू इज एन एग्जाम्पल. डेक्कन प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसाल्टिक लावा प्लेटू. ओके, बेसाल्टिक लावा प्लेटू. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, मैं जब बता रहा हूं विस्कस होगा तो फिर ये क्या बनाएगा? व्हेन इट मूव्स आउट थ्रू द विंड, it is sprayed and form the mountains. Okay, so the magma should be viscous, not watery. Watery होगा तो मैंने क्या बताया, वो spread करेगा, it covers the larger distance and when it solidified form the flat topped elevated highlands. Okay, now the example is Columbia Snake, Deccan Plateau. These are the lava plateau. So basaltic. उसके अलावा the example of cinder cone. Okay, cinder cone volcano. Remember this class, cinder cone. Okay, go and revise the volcanic landform. Okay, so in the cinder cone, okay, what you find? The rise of the magma which forms the volcanic peak. Then what you find here, जब आप देखेंगे the mountains like Kilimanjaro, okay, and the Mauna Loa, फिर तो आपने इस तरह से आप क्या देखते हो कि अब शील्ड के बारे में जब देखते हो, शील्ड एक समय में नहीं मिलते. शील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस. लेयर बाय लेयर निकलता है विस्कस, तो क्या बनाते हैं लेयर बाय लेयर्स. यहाँ पर क्या आपको दिखाई देता है कि यहाँ ऐसे 1 लेयर, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स ऐसे, तो ये पिक बनाते हैं. ओके, सो ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है, एक लेयर ऑफ मैग्मा, फिर उसके बाद डिफरेंट लेयर ऑफ मैग्मा, फिर डिफरेंट लेयर ऑफ मैग्मा. ये विस्कस मैग्मा है तो ये विंड से निकलने के बाद ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होता, तो लेयर बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर बनते हैं. वी कॉल्ड इट शील्ड. volcano is an example of that. Okay, so there is a फिर मैंने आपको बताया था एंडेसाइटिक. ओके, एंडेसाइटिक, द सिंडर कोन आर एंडेसाइटिक वोल्केनो. वोल्केनो ये एंडेसाइटिक है. उसके बाद अगर आप देखते हैं प्लूटोनिक, समटाइम्स व्हाट हैपन, जैसे आप देखते हो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एज यू नो, जब व्हेन द मैग्मा स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड, समटाइम्स व्हाट हैपन, ये सील्स बनाती हैं, डाइक्स बनाती हैं. ठीक है ना, आपने पढ़ा है, ठीक है ना, डाइक्स, सील्स. ओके, सो दे बिल्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड लेपोलिथ, लैकोलिथ, फोकोलिथ. ओके, ऑल दिस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. अगर ये इरोड हो जाता है आउटर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंट्रूसिव है, प्लूटोनिक रॉक है, ये नीचे ही मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाती है, ये ऊपर नहीं निकल पाती. लेकिन अगर इस तरह से सील है और ऊपर का लेयर इरोड हो गया तो ये सील क्या हो गया, ऊपर आ जाता है. सो सील अभी नीचे है, बिलो द क्रस्ट. ओके, बिकॉज मैग्मा हैज सॉलिडिफाइड हियर, बट व्हेन दिस आउटर लेयर इज इरोडेड बाय द विंड एंड वाटर एक्शन, then it still moves outward. Okay, this is also in the form of mountain. तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था ये बाहर आ गया, ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म अब सरफेस पर आ गया. कैसे आ गया? एट द एक्शन ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. उन्होंने ऊपर की लेयर हटा दी, ये बाहर आपको दिख रहे हैं, तो ये आपको ऐसे बाहर दिख रहे हैं. ठीक है ना, तो नाउ इट इज अ माउंटेन लाइक फीचर. ओके, इट इज अ mountain like feature. So what I have said that this is known as what? The mountains of accumulation. तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ? ब्लॉक माउंटेन्स,
Fold mountain, block mountain are as a result of compressional and tensional forces. Fold mountain is a result of compressional forces, and due to the volcanic activity, different kind of mountain of accumulation built and form. Okay, and there are different example of shield volcano, cinder cone, as well as this plutonic intrusive volcanic dome we can find out in different region of the world. Okay, जहाँ रिफ्ट वैलीज है, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसके अलोंग अगर आप देखेंगे देर आर सो मेनी वोल्केनिक पिक्स आर देयर. ओके, which forms which built due to the origin of or the outpouring of the magma along the rift, okay, along the fault lines. So we find various kind of volcanic peaks and the volcanic mountain all across the Rockies, Andes, okay, as well as along the African Rift Valley. But all these are the different types of माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन. वो सब अलग अलग हैं, इसलिए आपको डिटेल्स फिर से अगर उसको रिवाइज करना है, यू कैन रिवाइज. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग इन द वोल्केनिक लैंडफॉर्म. ओके, आप वहाँ एक बार रिवाइज कर लोगे सो ब्रश अप हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, वहाँ डिटेल्स है विथ ऑल द एग्जाम्पल. इसके बाद जब आप देखेंगे तो आई हैड डिस्कस एस्कार्पमेंट. देखिए, ओके, once you look at the escarpment, what I have said that, say for example, if this is the, say, plateau and it is dissected by the rivers, when the rivers dissected it, okay, then what happened? Such kind of a structure is forms. Here the rivers forms the valley. This is escarpment. इसे हम escarpment कहते हैं. It is a ridge. अब ये mountain हो गया, ये valley हो गई. पहले ये plateau था, river ने dissect कर दिया. तो ऐसे भी mountain बनते हैं, हम उसे escarpment कहते हैं. ये erosional processes से हो गया. लेकिन आपको तो यहां पर क्या प्रोसेस है? इरोजनल प्रोसेस. मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? एस्कार्पमेंट. ओके, सो व्हेन, अगर आप देखोगे, व्हेन द एलिवेटेड सरफेस इज फ्लैट टॉप्ड, हम इसे मेशा कहते हैं. आपको मैंने मेशा और ब्यूट स्ट्रक्चर बताया था. मेशा वाइडर फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर होते हैं, ब्यूट जो होते हैं छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको ब्यूट के, ये मेशा है. ओके, अभी क्या हो गया? अगर तुमने क्या देखा, दिस इज द मेशा फ्लैट टॉप सरफेस. अभी देखो यहां से, अगर यहाँ थोड़ी इंक्लाइनेशन हो गई, थोड़ी इंक्लाइनेशन हो गई, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा? अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनेगा, तो अब अगर पहले ऐसे था, अभी थोड़ा स्लाइड बेंड हो गया, तो इसके कारण स्लोप बना है. यहाँ पे पहले ये फ्लैट था, अभी स्लाइड स्लोप हो गया. ये रीजन एस्कार्पमेंट है. इधर से देखेंगे तो वर्टिकल होगा चढ़ाई, ठीक है ना, इधर की तरफ, इधर जेंटल होगा स्लोप, तो इसको एस्कार्पमेंट कहेंगे. ये स्ट्रक्चर सुएस्टा कहलाता है. तो ये देखो, okay, so this is known as suesta. Okay, this is escarpment. escarpment. उसके बाद आप एक हॉगबैक देखेंगे. हॉगबैक, यहाँ पर क्या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यहाँ देखो ये और वर्टिकल होगा, यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और बढ़ गया. ओके, सो वी कॉल्ड इट हॉगबैक. hogback. So I am talking about here escarpment. अब escarpment आपको क्या दिखाई देंगे? एक तो इरोजनल प्रोसेस से, दूसरा एज ऑफ प्लेट्यू. एज ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू के किनारे, जैसे अगर आप देखोगे छोटानागपुर प्लेट्यू, तो यहाँ पर ये जो छोटानागपुर प्लेट्यू है, इसका जो किनारा है राजमहल हिल्स, राजमहल hills. At the edge of plateau there is a hills, that is
known as Rajmahal Hills, an example of escarpment. It is an example of escarpment. Western Ghats is an example of escarpment. ओके, डेक्कन लावा प्लेटू के एज पे है, किनारे पर है, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्कारपमेंट. और इसका वेस्टर्न साइड अरेबियन सी, जब जब इंडियन प्लेट बेंड करता है तो अरेबियन सी क्रिएट होता है, उसके कारण वेस्टर्न घाट्स के रॉक्स यहाँ नीचे गिरते हैं. स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है. पिंक हैज गिवन द टर्म ट्रैपिंग टोपोग्राफी. स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट की तरफ आओगे तो अरेबियन बेसिन में रॉक्स जो है वो क्या है, वो नीचे की तरफ स्टेयर्स लाइक है. ओके, स्टेप्स लाइक है, नीचे की तरफ सबडक्ट कर गए. ओके, इसलिए वहां आपको नेचुरल हार्बर्स भी दिखाई देते हैं, गहराई ज्यादा है उस कोस्ट पर. ओके, सो एस्कार्पमेंट. So I had discussed that there is a different type of mountain.